Okay. Gate ये बंद कर दो. Good morning, everyone. My name is Shivani Tyagi, your current affair teacher, and this is a beautiful morning to start with today's current affair. So, as usual, appreciate yourself that you didn't give up. You are here in front of me, preparing for this examination, and whatever negative thoughts were coming in your mind, you handled it, right? You understood each and every step, right? So, with this thought, we'll start our today's current affair, today's morning. So, now let's see what our first news is telling to us and how it's going to help us in UPSC. Okay. So Kerala to become Keralam, Union Cabinet approves change of name. Okay, very important news. So recently we are seeing that how names are changing, right? So we'll try to understand this, in political view also, right? And we'll try to pick up the keywords which are necessary for UPSC exams, for mains exam, right? And we'll try to cover topics for prelims as well, right? By handling and understanding PYQs. Okay. So what we are understanding, so we are going to understand it with an example. Imagine that there is a classroom, right? And in that classroom, there is a student, right? And where a student is coming to you and she's saying that, ma'am, my real name is Shri Devi, but everyone calls me Shri. I want my real name on the attendance register, right? So this is exactly the scenario. This is exactly the situation that has like happened recently, right? For the state of Kerala. So for many years, people living in Kerala, they have been saying this, that our original name is, it should be our own language, right? So that is Malayalam, right? And that is what Keralam, right? So Kerala is an English version that was given to us because of certain phase, because of Britishers, right? So there are so many reasons. We'll be understanding this news with the history also. कि ये Keralam word आया कहाँ से है, right? And why we are trying to link it with this word now. So अगर हम बात करते हैं इस word की, right? So this word is basically, gives us linguistic thing also, this giving us, cultural aspect also, right? So now if we talk about this story, so the Kerala Legislative Assembly passed a resolution और उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है that we want our state name changed to Kerala, ठीक है? So this request is sent to central government, right? So इसके बाद में यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया ने इस चीज को डिस्कस किया, they discussed this and finally the proposal is approved, right? So now our law will be passed in the parliament to officially change the name for Kerala to Keralam, ठीक है? अब पार्लियामेंट जो होगा दैट विल बी द लास्ट थिंग, ठीक है? वहां पे डिसाइड होगा कि ये चेंज होगा या नहीं होगा, राइट? व्हेन बोथ हाउसेस दिस लॉ विल बी पास्ड, राइट? और मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर इफ दे विल एग्री टू इट, तब जाके हमारा ये लॉ पास होगा. इसका भी हम लोग स्टेप पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली कैसे होता है ये पास, राइट? So just like a student, right, correcting their real name in school records, right? So in the same way only this state is correcting its official identity also, ठीक है? जैसे रजिस्टर में उन्हें अपना नाम करेक्ट करना होता है, बिल्कुल ऐसे ही बात यहाँ पर हुई है कि हमें भी अपना नाम जो है करेक्ट करना है, राइट? सो दिस इज द बैकग्राउंड, दिस इज द बेसिक स्टोरी दैट वी आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? Now exactly what we are talking about, so union government has like approved the proposal, right? उन्होंने बोला है कि ठीक है आप केरला से केरलम पर शिफ्ट कर सकते हो, right? So this proposal came from where? This proposal came from Kerala Legislative Assembly, right? जो जिन्होंने ये unanimous right resolution पास किया है, right? तो पास कैसे होता है? So we are going to understand this one by one. पहला step है state resolution. Now ma'am, what is the state resolution? अगर हम बात करते हैं स्टेट रेजोल्यूशन की, सो द केरला असेंबली पास द रेजोल्यूशन आस्किंग टू चेंज द नेम फ्रॉम केरला टू केरलम, राइट? तो ये हमारा स्टेट रेजोल्यूशन, राइट? यहाँ पे पहला स्टेप क्या है? नाम बदलने की बात हुई है, राइट? व्हाट इज स्टेप टू? स्टेप टू इज सेंड टू यूनियन गवर्नमेंट, राइट? सो द प्रपोजल वाज सेंट टू द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर अप्रूवल, राइट? उसके बाद में स्टेप थ्री क्या है? यूनियन कैबिनेट, राइट? तो अगर हम बात करते हैं इसके अप्रूवल की, तो यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया दे डिस्कस एंड दे अप्रूव्ड इट, राइट? उन्होंने यहाँ पे नाम चेंज करने की बात को अप्रूव कर दिया है, राइट? आफ्टर दिस वी हैव स्टेप नंबर 4, दैट इज पार्लियामेंट लॉ. अब पार्लियामेंट लॉ क्या है? सो अ बिल विल बी इंट्रोड्यूस्ड, राइट, इन पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट विल पास अ लॉ, राइट? और वो यहाँ पे अमेंड करेंगे इस नेम को इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? वो यहाँ पर अमेंड होने के बाद में, राइट, सो एवरीथिंग बेसिकली डिपेंड्स ऑन हेयर, राइट? उसके बाद में अगर हम बात करते हैं फाइनल रिजल्ट, सो आफ्टर द लॉ इज पास्ड, राइट, देन अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, सो आर्टिकल 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव इन दिस केस. व्हाट इज आर्टिकल 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? सो दिस आर्टिकल बेसिकली अलाउज पार्लियामेंट to form new state
या फिर अगर उन्हें कोई बाउंड्री चेंज करनी है, या फिर अगर उन्हें कोई नेम चेंज करना है, सो दे कैन डू इट, ठीक है। इवन यहाँ पे स्टेट का भी से नहीं होता है, राइट। इफ दे वांट टू डू इट, सो दे कैन डू दीज थ्री थिंग्स इन आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आई होप बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा कि अब तक क्या क्या चीजें बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, अब हम लोग बात करेंगे कि ये फर्स्ट स्केड्यूल ये एग्जैक्टली है क्या। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस फर्स्ट स्केड्यूल, सो फर्स्ट स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स नेम ऑफ द स्टेट, ठीक है, नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, राइट, और आफ्टर रीनेमिंग द स्केड्यूल इज अपडेटेड, राइट। अगर हम बात करें कि एग्जैक्टली किस किस पार्ट में होता है, किस वे में होता है, सो पहला स्टेप ये होगा कि आपको जो है प्रपोजल देना है, राइट। सो दिस प्रपोजल इज गिवन to the government, right, ये proposal भेज दिया गया that we want to change our name, right. So the idea to change our state's name can like come from the state government also, ठीक है, और वो central government से भी आ सकता है, दोनों में से किसी का भी आ सकता है, right. For example, the government of Kerala wants to like rename its name Keralam, right. तो ये हमारे पास में पहला step होता है, right. I hope the voice is audible. ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में है this proposal came के बाद में this bill is introduced, right. So what is the bill? So this bill which is basically talking about the changing of name, right. So the state government will basically decide itself, या फिर we can say that central government can come, right. So they want to change this name, right. So it can be introduced in Lok Sabha or it can be introduced in Rajya Sabha, right. तो ये दोनों ही हाउसेज में पहले इंट्रोड्यूस होगा, वहां पर बेसिकली पास किया जाएगा, right. After this, what third thing we have president sends its state legislature, right. So it passes the law. तो यहाँ पर basically majority of the members, right, जो हमारे पास में Parliament of India, right, sends the bill to the all the concerned state legislative, and this basically gives their say to this, और उसके बाद में ही हमारा जो है ये बिल पास होता है। उसके बाद में व्हाट इज द फोर्थ थिंग दैट वी हैव, दैट इज पार्लियामेंट पासेस द लॉ, ठीक है। अब यहाँ पे पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, राइट। जो हमारा फाइनल ऑर्डर आएगा वो आएगा हमारा यहाँ से, राइट। वो अपनी सिंपल मेजोरिटी के साथ में दे आर गोइंग टू डिसाइड द फाइनल ऑर्डर, द फाइनल पावर दे आर गोइंग टू डिसाइड बाय पार्लियामेंट, राइट। सो उसके बाद में हमारा जो है दिस is going to be updated, right. So this first schedule is going to decide, right, of the constitution ki name of the old states should be there, right, name of the old union territory should be there, right, unka territorial boundaries should be there, right. So whenever a state is renamed, जैसे कि केरलम से हो जाएगा, right. So ये जो हमारा schedule है वो change हो जाएगा, right. So इस first schedule में हमारे सारे name होती है, हमारी सारी boundaries होती है, और अगर उसमें कोई change होता है तो उसके बाद में ये first schedule हमारा update होता है, right. I hope this is understood. अब उसके बाद में बात करते हैं हम लोग history की, ये नाम आया कहां से। सो दिस वर्ड केरलम, सो दिस केरा मींस कोकोनट, अलम मींस लैंड, सो इट मींस लैंड ऑफ कोकोनट, राइट। एंड अगर हम देखें केरला में, सो दिस इज नोन फॉर इट ओनली, राइट। सो दिस इज लैंड ऑफ कोकोनट ट्रीज, सो एंड दिस फिट्स परफेक्टली बिकॉज ऑफ केरला हैज लाइक लॉन्ग कोस्ट लाइन है उनकी, राइट। कोकोनट ट्रीज उनके वहां पे हर जगह में, राइट, एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी है, राइट। सो दिस इज टेलिंग अस अबाउट देयर एंशिएंट रेफरेंसेस आल्सो, राइट। अगर हम एंशिएंट रेफरेंसेस की बात करते हैं तो जो ये केरलम वर्ड है, ये ऐसा नहीं है कि हमने पहली बार सुना है, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम वी आर हियरिंग दिस वर्ड, राइट। दिस इज वी हर्ड इन वेरी एंशिएंट मेथड्स आल्सो, राइट। अगर हम संगम लिटरेचर में बात करें तो यहाँ पे तमिल टेक्स्ट में इस शब्द का जिक्र बहुत बार हुआ है, राइट। संगम के बाद में अगर हम बात करते हैं चेरा किंगडम में भी, राइट, तो वहां पर भी, राइट। सो दिस रीजन वाज आल्सो रूल्ड बाय लाइक चेरा डायनेस्टी एंड दिस रूल वाज आल्सो नोन एज लाइक लेटर इट लाइक नोन एज केरलम आल्सो, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ग्रीक और रोमन रिकॉर्ड्स की, तो यहाँ पर भी हमने देखा था कि जैसे कि हमारे फॉरेन ट्रैवलर्स थे, तो जो फॉरेन ट्रैवलर्स लाइक ग्रीक्स वर देयर, रोमन्स वर देयर, all described this region as a rich spice and land, right. So pepper, like all those cinnamon, so these were included in there, right. So they referred it as like Kerala region, so they also mentioned this word over there. तो ये नहीं है कि हमने पहली बार ही 2026 में वर्ड सुना, नहीं, दिस वर्ड इज एग्जिस्टिंग बिफोर, और उसी ओरिजिन के बेसिस पे, उसी कल्चरल बेसिस पे, उसी लिंग्विस्टिक बेसिस पे दे वांट टू रीनेम इट, ठीक है। अब उसके बाद में बात करते हैं हम लोग फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न केरला, ओके। अगर हम बात करते हैं तो उनकी हिस्ट्री कहां से शुरू हुई, सो वी आर गोइंग टू गो बैक टू 1956, ठीक है, यहां से शुरू करेंगे हम, ठीक है। 1956 में क्या हुआ, सो modern Kerala was formed in 1956, right. So through the state's registration act that happened in 1956, right. अब ये बनाया क्यों गया था, why was it created? So this was created because
इंडिया रिकॉग्नाइज्ड स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, राइट. सो मलयालम स्पीकिंग जो हमारा एरिया था वो कंबाइंड थे, राइट. उसके बाद में कोचिन के बेसिस पे, मालबार के बेसिस पे, राइट. सो दे फॉर्म, राइट. सो देन वी got to know when then we this word Kerala was introduced to us. ठीक है. नाउ अब ये चेंज की बात क्यों हो रही है, व्हाई चेंज नेम टू केरलम. अब एग्जैक्टली इतने टाइम बाद व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इन 2026, अभी क्या जरूरत पड़ी है. तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो दिस बेसिकली टेल्स अस अबाउट द आइडेंटिटी एंड दिस टेल्स अस अबाउट द कल्चर आल्सो. ठीक है. देखो सबसे पहली है लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी. ठीक है. लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को अगर हम समझने की कोशिश करें सो केरलम इज द करेक्ट मलयालम प्रोनाउंसिएशन, राइट. उसके बाद में कल्चरल प्राइड, इट रिफ्लेक्ट्स ट्रेडिशंस एंड हेरिटेज, राइट. जो हमारा कल्चर है, राइट, हमारे ट्रेडिशंस को बताता है, लोकल कल्चर को बताता है, राइट. सो दिस इज अ कल्चरल प्राइड. आफ्टर दिस हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी, ओरिजिनल नेम सिंस एंशिएंट टाइम्स, जैसे कि मैंने अभी बताया कि संगम में भी था, राइट. एंड देयर वर ट्रैवलर्स आल्सो मेंशन दिस नेम आल्सो. तो ऐसा नहीं है कि हम लोग पहली बार सुन रहे हैं, राइट. सो दिस इज कनेक्टेड टू व्हाट, दिस इज कनेक्टेड टू हिस्ट्री आल्सो, राइट. सो दिस इज व्हाई दे आर टॉकिंग अबाउट चेंज ऑफ दिस नेम. ठीक है. उसके बाद में द फोर्थ थिंग दैट वी हैव इज डीकोलोनाइजेशन. ठीक है. जो हमारा जो माइंडसेट है, दिस डीकोलोनाइजेशन माइंडसेट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट. सो सम लीडर्स, सम पीपल फील दैट इंग्लिश नेम वर गिवन ड्यूरिंग कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, राइट. अगर हम आज की बात करते हैं सो हम जो है अपना इंडिजिनस नेम को सिर्फ रिक्लेम कर रहे हैं, राइट. फॉर एग्जांपल बॉम्बे का मुंबई कर दिया गया, मद्रास का चेन्नई, राइट. सो दैट्स व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग, राइट. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट फेडरलिज्म इन एक्शन. और फेडरलिज्म की बात क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, हाउ वी विल फिट दिस कांसेप्ट ओवर है. तो ये जो केस है, दिस केस बेसिकली शोज अस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. हाउ? बिकॉज स्टेट मेड डिमांड, राइट. सेंटर इज कंसीडरिंग इट, राइट. Parliament is going to decide it, right. So what we have distribution of power over here, right. स्टेट ने कुछ कहा, सेंटर ने सुना, पार्लियामेंट में इंप्लीमेंट होगा, राइट. सो दिस इज व्हाट, दिस इज फेडरलिज्म इन एक्शन, राइट. सो दिस इज शोइंग अस सेंटर स्टेट कोऑपरेशन टू अस, राइट. उसके बाद में दिस इज आल्सो टेलिंग अस अबाउट पॉलिटिकल एंड सोशल डायमेंशंस, राइट. अगर हम पॉलिटिकल और सोशल डायमेंशन की बात करते हैं, so when we talk about renaming Kerala से Keralam, so it is not about a name change that we are talking about, right. बल्कि ये एक पॉलिटिकल और सोशल मीनिंग भी लेकर आता है. Why? Because here we are talking about dignity, here we are talking about culture, here we are talking about aspect of one's state, right. So this is why it is connecting to political and social dimension also, right. Because यहाँ पर जो है हम अलग अलग स्ट्रेंथ की बात करते हैं, लोकल कल्चर्स की बात करते हैं, we are talking about emotions over here, right. So this is why it is connected to social dimension. अच्छा, now next come to another thing. So first thing, अगर हम बात करें इसकी, तो ये जो डिमांड है, this is like a long standing demand, right. So this demand to use Keralam has like existed for many years, right. Many cultural groups came, writers came, politicians came, right. And they basically demanded this. उन्होंने पहले बोला that we should have like our original Malayalam name, right. दूसरी चीज, ये रीजनल प्राइड को बताता है. रीजनल प्राइड को कैसे बताता है? सो द नेम केरलम, राइट, इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट, इट रिफ्लेक्ट्स मलयालम लैंग्वेज. ठीक है. लोकल प्रोनाउंसिएशन को दिखाता है, राइट. उसके बाद में दिस इज अबाउट द रीजनल प्राइड एज वेल, राइट. आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें, सो दिस इज टेलिंग अस अबाउट द पॉलिटिक्स एज वेल, राइट, वेयर दिस is connected with the identity, right. So people vote and support their language, so they are so they can save their heritage, they can save their culture, they can preserve their culture, right. And this is exactly what the state of people are demanding, कि उनका नाम जो है केरला से केरलम चेंज कर दिया जाए, right. Now when we talk about things like this, ऐसे ही तो चेंज नहीं हो जाती है, राइट. हर एक चीज का जो भी हम करते हैं, there are like lots and consequences also and challenges also, right. So now we are going to discuss about कि ये नेम इंप्लीमेंट करने से क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ेंगे, राइट. ओके. Okay. Now the first challenge that we are going to face is administrative cost. ठीक है. फाइनेंशियल बर्डन हमारे ऊपर बहुत ज्यादा आएगा. This is the first thing that we will be facing, right. So changing the name of state means that you are changing everything official. क्या क्या चेंज कर रहे हो? आप अपना नाम चेंज कर रहे हो डॉक्यूमेंट्स में. यू आर बेसिकली चेंजिंग ईच एंड एवरीथिंग, राइट. ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आपको चेंज करने पड़ेंगे. यू हैव टू चेंज योर गवर्नमेंट वेबसाइट्स आल्सो. स्कूल टेक्स्ट बुक्स में भी यू हैव टू मेक द चेंजेस. मैप्स, राइट. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी चेंज, राइट. रेलवे के बॉर्डर्स, राइट. एयरपोर्ट्स की साइंस, राइट. Instead of like spending money on name change, right. So this criticism king that why we are not focusing on development, हम लोग डेवलपमेंट की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? Why we are focusing on name changing? ठीक है. Whatever reasons
we have like understood कि linguistic, region, culture, right? उसके basis पे we are changing, and also it connects us with the history also. But it has been like said कि अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है history की, so why we are not moving with development? ठीक है, resources अपने उस चीज में utilize करो, because all this will require what? Money, huge public money, right? So instead of like spending money on name change, the government should spend on what? On education, health, jobs, infrastructure. उस चीज पर काम लगाओ, right? So this is the first criticism that came. उसके बाद में political symbolism versus real development. So what people are saying कि ये कुछ नहीं है, this is just political symbol. Vote gaining का एक दूसरा बहाना है ये, which government is using, right? So they are trying to manipulate, they're just trying to use this emotional satisfaction, right? Because it will give them that kind of satisfaction. तो इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ political symbolism है, ये नाम चेंज करने वाला is just political symbolism. इसका कल्चर से लेना देना नहीं है, इसका हिस्ट्री से लेना देना नहीं है, इसका किसी चीज से लेना देना नहीं है, right? But it does not solve real problems like unemployment. It does not solve poverty. It will not solve inflation. It will not solve, right? Or other than that, it will create problem only. ठीक है, इसकी वजह से this is the second criticism that we have. I hope the second criticism is understood to you. Okay, the third thing, तीसरी चीज की अगर हम बात करें, confusion due to frequent name changes. नाउ अगर हम बार बार एक चीज का नाम बदलते रहे, ठीक है, तो जो हमने अभी बात करी है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में चेंज होगी, वेबसाइट्स में चेंज करना पड़ेगा, टेक्स्ट बुक्स में चेंज करना पड़ेगा, बाउंड्रीज में चेंज करना पड़ेगा. सो देयर आर लाइक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट वी हैव टू चेंज, राइट? सो दिस नेम्स आर चेंज्ड अगेन एंड अगेन, राइट? इट विल क्रिएट कंफ्यूजन, राइट? For students also, for tourists also, for businessmen, for basically international community as well, right? So for example, we have to like update maps also, books also, database also, passports also, right? And everything needs to be updated now, right? So this is the third thing that we have, that is confusion, right? Uske baad mein the fourth, another important thing, that is international recognition and branding issues. तो if state is basically building a global identity over time, ठीक है? और केरला की अगर हम बात करें तो because of its like tourist place, और उसके बाद इसकी spices की वजह से, right? And because of its cultural heritage also, so it has been seen कि global recognition जो है केरला को बहुत ज्यादा मिला है, राइट? केरला को बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन मिला उस चीज में, राइट? फॉर टूरिज्म ऑल्सो, आयुर्वेदा की अगर हम बात करें, लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें, राइट? फॉर दैट दिस स्टेट इज नोन, राइट? इफ वी आर चेंजिंग दिस नेम, सो इट विल टेक टाइम फॉर न्यू नेम टू कम अप, राइट? तो इसीलिए यहाँ पे ग्लोबल रिकॉग्निशन में प्रॉब्लम थी, इट विल क्रिएट कंफ्यूजन ऑल्सो. उसके बाद थर्ड, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंटर, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लोकल कॉम्प्लेक्सिटी. तो रीनेमिंग इज नॉट जस्ट इमोशनल, ठीक है? लीगली भी बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है ये. कैसे है? क्योंकि पहले तो पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होगा, राइट? दूसरा, फर्स्ट शेड्यूल वापस से, जैसे कि मैंने बताया कि वहां पे हमारे पास यूनियन टेरिटरीज, राइट? हमारे पास स्टेट, सबका नाम वहां पर होता है, राइट? सो नाउ वी हैव टू चेंज द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो, राइट? चेंजिंग इन मेनी लॉज एंड एक्ट्स, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आल्सो, राइट? तो ये सारी चीजें हमें अपडेट करनी पड़ेगी. तो दिस प्रोसेस विल टेक व्हाट? दिस प्रोसेस विल टेक टाइम एंड एफर्ट. And what people are saying, that instead of wasting your time over here, why we are not focusing on development, why we are not focusing or utilizing these resources somewhere else where they are actually needed, right? So this is the criticism that people are coming up with. Exactly, Gargi. Okay, now one question for you, then we'll move to the another news. As usual, 2 मिनट 2 सेकेंड 20 सेकेंड, थोड़ा जल्दी समय लीजिए and try to solve this answer. फिर उसके बाद में we'll move to the another news. Right answer in the chat box, please. Parliament can alter the name of the state, so this is correct, right? So under Article 3, Parliament have the power to change the name of a state. Yes, bilkul. Change a bill can be introduced in either house of the Parliament, so this is also correct. A bill for changing the name of boundary of a state can be introduced in either, या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में. तीसरी अगर बात करते हैं कंसेंट की, right? So this is talking about what? कि consent of the concerned state legislature is mandatory. बिल्कुल सबसे पहला पॉइंटर मैंने बताया कि नहीं जरूरी होता है, right? Consent state का जरूरी नहीं होता है, right? So parliament can still pass the law even if state is disagreeing. तो हमारे पास में क्या करेक्ट आंसर है? The correct answer that we have is 1 and 2. Why I cannot see answers on the portal और chat box में क्यों नहीं है?
Okay, now let's move to another. India set to launch free nationwide HPV vaccination for adults and girls. Very important news. Again, telling you, whenever we talk about HPV, make sure that you are preparing it for like prelims also, ठीक है? और उसके साथ साथ में for the main answers you have to pick out the words, ठीक है? कि health wise what our government is doing. क्योंकि हर बार में एक दो questions हमेशा हमेशा आता है, right? So for both prelims and mains, this news is very important to you, ठीक है? चलो exactly बात करते हैं कि हम लोग क्या बात करें. तो imagine karo that there is a doctor and she visited to you, right? And she tells the girl that there is a dangerous disease that is known as cervical cancer, right? And it is existing. And not only that, it affects women in India. But the good news that we have is that, it can be prevented, right? So now the girl asks that how, so do this doctor smiles and she says that there is a special vaccine that is known as HPV vaccine, right? So if we give this vaccine to girls at a young age, right? So they can be protected from this cancer, right? Future में उसे protect किया जा सकता है, right? So इससे पहले this vaccine was very expensive और सबसे दूसरी बात this was not available, ठीक है? एक तो पहले महंगी बहुत थी, दूसरा available नहीं, right? So many girls could not take it, but now finally government realized this problem and government of India has like decided something very huge, very big, right? So it will launch a free nationwide vaccination program. सारे ही एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए फ्रॉम एज 9 to 14 तक वो ये चीज इंट्रोड्यूस करने वाली है, ठीक है? सो दे विल गेट दिस वैक्सीन एंड इट विल बी गिवन थ्रू द गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम, राइट? एंड दिस इज अ वेरी ह्यूज स्टेप, दिस इज अ वेरी बिग स्टेप. व्हाई इज इट सो? बिकॉज इन इंडिया मेनी वीमेन लाइक डाई फ्रॉम सर्विकल कैंसर, राइट? हर साल में वो नंबर जो है बहुत ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है. दैट नंबर इज लाइक इंक्रीजिंग डे बाय डे, राइट? by year, right? So this cancer is mostly caused by virus that is known as HPV, right? अगर हम इसकी बात करते हैं, दिस डिसीज इज प्रिवेंटेबल, ठीक है? अगर अर्ली वैक्सीनेशन प्रॉपरली टाइम से दी जाए तो वहां से प्रोटेक्शन आपको मिल सकती है. सो नाउ विद दिस प्रोग्राम गर्ल्स विल बी प्रोटेक्टेड अर्ली, राइट? women's health will be improved, right? And India will reduce its cancer death in future also, ठीक है? अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखो, जब भी कोई हेल्थ केयर स्कीम या फिर कोई हेल्थ केयर डिसीजन लिया जाता है गवर्नमेंट का, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन मीन्स अ लॉट. और उसके साथ साथ में यू हैव टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑल्सो. हिस्ट्री में यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर वो चीज इतने पहले से शुरू है तो अभी इंप्लीमेंट करने में इतना टाइम क्यों लगा है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एग्जैक्टली लैग कहाँ करती है. अगर कोई सेंटर चीज पास कर देती है, स्टेट में इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, लोकल बॉडीज उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही है. सो दिस इज अ फ्लो ऑफ मिस्टेक दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड बीइंग अ यूपीएससी स्टूडेंट, ठीक है? चलो, बेसिक स्टोरी आई होप समझ में आ चुकी होगी कि क्या है. Now let's understand what exactly this news is about. So India is launching a nationwide free HPV vaccination program for adults and girls 9 to 14 years. ठीक है? इतनी न्यूज सबको पता है, राइट? एम क्या है इसका? एम ये है कि कैंसर को प्रिवेंट करना हमें, राइट? फॉर विमेन इन फ्यूचर, राइट? नाउ व्हाट इज HPV? HPV इज ह्यूमन पैपिलोमावायरस, राइट? ये डेंजरस क्यों है? जो हमारे पास में कैंसर्स है, राइट? देयर आर टाइप्स ऑफ कैंसर दैट वी हैव, राइट? इसमें हमारे पास में सम टाइप्स ऑफ लाइक HPV कैंसर्स कैन कॉल सर्विकल कैंसर्स, राइट? ये जो सर्विकल कैंसर है ये हमारे पास में सबसे कॉमन कैंसर है, राइट? जो हमारे पास में बाकी दूसरे कैंसर है, जैसे कि हमारे पास में टाइप 16 हो गया एंड टाइप 18 इज आल्सो देयर, राइट? तो ये जो दो कैंसर्स है दे कॉजेज अराउंड 70% ऑफ सर्विकल कैंसर्स. कितने? 70% कॉज करते हैं, राइट? अब ये सर्विकल कैंसर एग्जैक्टली है क्या, राइट? अगर हम इसकी बात करें तो दिस इज कैंसर ऑफ द सर्विक्स, यानी कि लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट? सो इन इंडिया इफ वी टॉक अबाउट one of the top causes of cancer death among women is this, right? And many cases are like detected late, right? So इसी चीज के लिए प्रिवेंट करना हमारे लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट? सो इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया दैट वी हैव टू बेसिकली मूव विद दिस हेल्थ केयर स्कीम, क्योंकि हर साल में नंबर इस चीज के बढ़ते ही जा रहे थे. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है दैट वीमेन आर नॉट अवेयर दैट सच थिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट. इसीलिए वो प्रिवेंशन तो हो ही नहीं पाता है, रिकॉग्नाइज भी नहीं हो पाता है, इसीलिए बहुत ज्यादा लेट हो जाता है और वो दूसरी स्टेज में पहुंच जाता है, राइट? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दिस HPV कि एग्जैक्टली ये है क्या. So if we talk about HPV vaccine, so India using this vaccine, like this is a guardless vaccine that we are talking about. So this vaccine is going to protect girls from this HPV infection, right? अब ये protects किसके against करने वाला है? So this protect basically 4 dangerous HPV types, ठीक है? 4 यहाँ पे HPV types की बात करेंगे, जिसमें से 2 तो ये है हमारे पास में 6 और 18, right? And other that we have is 11, right? तो अगर हम इन 4 की बात करते हैं तो HPV 6 and 18 is there, right? So these 2 types causes most cervical cancers in women, ठीक है? तो ये सबसे ज्यादा cancers cause करते हैं, right?
देन वी हैव अनदर नॉन कैंसरस, ठीक है, जो कि हमारे पास में नॉन कैंसरस कौन कौन से हैं, हमारे पास में 6 और 11, राइट। तो सबसे कॉमन है हमारे पास में 6 एंड 18, और सबसे जो नॉन कॉमन है वो हमारे पास में 6 और 11, राइट। सो दीज आर लाइक दे कॉजेज जेनेटिकल वॉर्ड्स एंड दे कॉजेज नॉन कैंसर इन्फेक्शन, राइट। अगर हम डोज की यहाँ पर बात करते हैं तो पहले जो था हमारे पास में 2 या 3 डोजेस की रिक्वायरमेंट होती थी, राइट, वी नीडेड 2 और 3 डोजेस, राइट। नाउ अभी जो है अकॉर्डिंग टू WHO, राइट, उनके रिकमेंडेशन के हिसाब से एक ही डोज यानी कि सिंगल डोज इज इनफ, राइट। सो दिस इज बेस्ड ऑन रिसर्च बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। So now we are going to make our this health program more cheaper, right, and we are going to make it easier to implement, और उसके साथ साथ में in this, right, so we'll be focusing on that, right। अगर हम बात करें कि किस किस के लिए है, यहाँ पे हम किस एज को टारगेट कर रहे हैं, so we are targeting age 9 to 14, right, because most girls haven't been exposed to HPV, right। so हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, किया जाए, right, so this age group responds better vaccine, right, so we'll be working with this group। पहले तो हम लोग यहाँ से काम करना शुरू करेंगे, right, understood। Okay, now let's move to another thing of this news, which is features of India's HPV program। तो इंडिया के HPV प्रोग्राम की अगर बात करें तो दिस वैक्सीनेशन प्रोग्राम हैज लाइक मेनी स्ट्रॉन्ग फीचर्स। क्या क्या स्ट्रॉन्ग फीचर्स है हमारे पास में, सबसे पहला तो है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट विल गिव वैक्सीन फ्री टू एवरी गर्ल, राइट। वॉलंटरी का मतलब है दैट नो वन इज फोर्स्ड, ठीक है, पेरेंट्स एंड गर्ल्स कैन लाइक चूज देमसेल्फ दैट इफ दे वांट टू हैव दिस वैक्सीन या फिर नहीं लेनी है, राइट। तीसरी चीज नेशन वाइड कवरेज। नेशन वाइड कवरेज का मतलब क्या है, दैट बेसिकली प्रोग्राम विल बेसिकली रन इन ऑल द स्टेट्स, राइट, सारी ही स्टेट में कवर होगा और उसके बाद में इट विल बी कवर्ड इन ऑल यूनियन टेरिटरीज आल्सो, राइट। उसके साथ में अभी हमने WHO की बात करी, सो दिस इज कवरिंग बेसिकली इंटरनेशनल सपोर्ट एज वेल, ठीक है, हमारी जो वैक्सीन है इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय WHO आल्सो, ठीक है, तो हमारे पास में सपोर्ट नेशन वाइड है, राइट, सो पीपल आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट इट, राइट। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं these awareness camps की, right, so government is going to run these campaigns, schools में run किए जाएंगे, हेल्थ केयर बेसिकली मिशंस होंगे, राइट, उसके साथ साथ में there should be like centers in villages also, right, ताकि हमारी जो अवेयरनेस है it should be like spread to cervical cancer also, उसका प्रिवेंशन के लिए भी बताया जाए, and we have to explain the importance of vaccination as well, right, so basically we have to cover all these things over here, right। उसके बाद में अगर गवर्नमेंट पॉलिसी की बात करें तो we have national health missions, right, we have Ayushman Bharat, we have universal immunization program, right, so इन्हीं के बेसिस पे हम लोग ये हेल्थ स्कीम जो है चला रहे हैं, right, which basically talks about health issues over here, right। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं this HPV vaccination program is part of India's preventive healthcare model, right, and this is connecting to major things over here जो कि यहाँ पे mention है। I hope it is understood। Okay, नेशनल हेल्थ मिशन की अगर हम बात करते हैं NHM की, सो दिस बेसिकली फोकसेस ऑन पब्लिक हेल्थ, राइट, हमारे जितने भी चाइल्ड केयर हो गए, उसके बाद में डिजीज प्रिवेंशन के बारे में बात करता है, राइट, सो दिस HPV वैक्सीनेशन फिट्स परफेक्टली इनटू दिस प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, राइट। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की, सो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन द वर्ल्ड, राइट। HPV वैक्सीन विल बी इंटीग्रेटेड इनटू दिस सिस्टम फॉर लाइक लार्ज स्केल डिलीवरी के लिए हमने इसे चूज किया, राइट। आयुष्मान भारत सबको पता है ये किस चीज पे फोकस करता है, प्रिवेंटिव केयर पे फोकस करता है, दिस फोकसेस ऑन प्राइमरी हेल्थ आल्सो, राइट, हेल्थ एंड वेलनेस, राइट, सेंटर्स पे फोकस करता है, राइट, and we have to prevent hair cervical cancer that is going to reduce our future treatment cost also, so this is why हमने ये चीज यहाँ पे ये हेल्थ केयर इंश्योरेंस जो है चूज किया है। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई है, राइट। सो इफ वी टॉक अबाउट दिस, तो पहले की सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि इंडिया में HPV वैक्सीन वाज लाइक अवेलेबल, कहाँ पे अवेलेबल थी, सिर्फ प्राइवेट में हॉस्पिटल्स में अवेलेबल थी, राइट। सो प्रॉब्लम वाज दैट नाउ बिकॉज इट इज लाइक अवेलेबल इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स, so it means what, it is expensive, right। उसके साथ साथ में प्रॉब्लम ये थी that poor families they could not have access to it, they could not afford it, right। so many girls because of it remained unprotected, right। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हेल्थ इनक्वालिटी इंक्रीज हो गई, इंपॉर्टेंट फैक्टर, एंड यूपीएससी लव दिस कांसेप्ट, राइट। सो अगर हम बात करते हैं देयर वाज पायलट प्रोजेक्ट आल्सो, मतलब एक स्मॉल एक्सपेरिमेंट भी किया गया था।
स्मॉल प्रोजेक्ट क्या है? सो दिस वाज लाइक अ टेस्ट, बेसिकली देख रहे थे कि कोई चीज काम करती है या नहीं करती है, राइट? सो यहाँ पर क्या था कि पायलट प्रोजेक्ट में द स्मॉल एक्सपेरिमेंट, सो स्मॉल टेस्ट बेसिकली टेस्टेड दैट द वैक्सीन फर्स्ट, राइट? फॉर एग्जांपल सिक्किम में, राइट, सिक्किम गेव फ्री एचपीवी वैक्सीन टू ऑल गर्ल्स, राइट? और ये जो सिक्किम वाला प्रोग्राम था दैट वाज लाइक ह्यूज सक्सेसफुल, राइट? बहुत ज्यादा अच्छे से सक्सेस हुआ था। सो यहाँ पे हमें देखने को मिला कि गवर्नमेंट डिलीवरी इज पॉसिबल, राइट? सो फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, राइट, फ्रॉम दिस policy, right, we from this pilot project we came to know that yes this could be done. मतलब अगर ये सिक्किम में इम्प्लीमेंट हो सकता है तो ये बाकी स्टेट में भी बहुत इजीली इम्प्लीमेंट हो सकता है, राइट? अगर हम आज की बात करते हैं, if we talk about this present situation, if we talk about this 2026 scenario, so government basically expanding it to the nationwide free program, right? So this is a major public health reform. क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे एवरी गर्ल, राइट, फ्रॉम रिच टू पुअर, राइट, दे कैन बी प्रोटेक्टेड, दे शुड बी प्रोटेक्टेड, राइट? So this prevention healthcare is being very important, and it is going to be strengthened also, right? I hope it is understood. Is there any question? अच्छा, इंडिया की तो चलो हमने बात कर ली दैट इंडिया इज डूइंग दिस प्रोग्राम, बट is India like the first country who is moving with this? No. So when we talk about other countries, so many countries already run successful HPV vaccination, right? So पहले की अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, राइट, यूनाइटेड किंगडम की, उसके बाद में यूनाइटेड स्टेट की, हमारे पास वी हैव डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस आल्सो। अगर हम ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल लेते हैं, राइट, सो ऑस्ट्रेलिया इज नाउ वेरी वेरी क्लोज टू एलिमिनेटिंग सर्जिकल कैंसर, राइट? क्यों? क्योंकि वहां पे हाई वैक्सीनेशन कवरेज पहले से ही है, राइट? अवेयरनेस जो है दैट इज लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग, right? Regular screening is happening there. People are like aware that this type of condition is happening to them, right? So this shows that India can also achieve this one. So now because Australia is moving with that step, so it is like recognized that yes, India can also achieve this step. ठीक है? अब now we are going to understand that why this program is important to us, right? So पहला तो है that it is going to be like important for preventive healthcare, right? मतलब instead of treating कैंसर लेटर, हम डिजीज को पहले से ही रोक देंगे, राइट? सो वी आर गोइंग टू स्टॉप दिस डिजीज बिफोर। इसीलिए हमने एज 14 पर ये वैक्सीनेशन रखी है, राइट? सो दैट अर्ली क्योर हमारे पास में हो सके। दूसरा, विमेन एम्पावरमेंट, राइट? Healthy women is what? Strong society, right? So HPV vaccination is going to protect them, right? हमारा reproductive health जो है और ज्यादा अच्छा होगा, life expectancy अच्छी होगी, right? So when we talk about women, we are talking one section of the society, right? इसीलिए यहाँ पे, and these women are also what? They are also resources, right? उसके बाद में health care cost हमारी खत्म होगी। अगर हम लोग कैंसर ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो वो कितना ज्यादा एक्सपेंसिव है सबको पता है, लॉन्ग टर्म है, राइट? बट ए वैक्सीनेशन इट इज चीप, ठीक है, इजीली हम इसको क्योर कर सकते हैं, तो फिर उस स्टेप पर जाना ही क्यों है, कैंसर की तरफ जाना ही क्यों है, राइट? सो दिस इज लाइक टेकिंग क्योर ऑफ योर प्रॉब्लम्स, राइट? So we are going to save government also, and we are going to save family also, right? Now because I told you that women are what? Women are nothing but they are resources. Each and every human being, if I have to like speak in the language of like philosophy and thinking, everyone in this planet is like resource, right? हर एक human being resource है, right? अगर we are talking about one section of the society that is women, अगर हम उन्हीं को ठीक नहीं रखेंगे, so this means what? इकोनॉमी पर भी बर्डन आएगा। Why? Because डिपेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी। डिपेंडेंसी इंक्रीज होगी तो जो हमारी कॉस्ट है, जो डेवलपमेंट में जानी चाहिए, वो कहां पर जाएगी? वो हेल्थ केयर में जाएगी, right? So this shift of like resources, this shift of money, right, it will be like wasted, right? So this is why we are going to take this preventive measure. I hope this is understood. Now with this, we'll move to another news of today's. An Israel visit, its strategic economy, regional impact. Okay, another important news for prelims and mains, both things. ठीक है, एग्जाम्पल की तरह समझेंगे तो इंडिया को तुम ऐसे कंसीडर करो, कंसीडर इंडिया लाइक अ स्मार्ट स्टूडेंट, राइट, who has like many friends, right? different parts of the world में अलग अलग दोस्त हैं उसके पास में, right? and one of these friend is very technologically advanced, ठीक है? किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? बात कर रहे हैं इजराइल की, right? So now India basically decides to visit Israel, right? We are not talking about friendship here, right? But we are talking about this visit for three important reasons. क्या तीन important रीजन है? पहला तो टू बिकम स्ट्रॉन्गर इन सिक्योरिटी, राइट? सिक्योरिटी कंसर्न से दिस विजिट इज इंपॉर्टेंट टू अस, ठीक है? क्योंकि हमारे यहाँ पे, एज आई टोल्ड यू, दैट दे आर वेरी रिच इन टेक्नोलॉजी, दे आर रिच इन बेसिकली डिफरेंट सोर्स, राइट? तो पहला तो है हमारे पास में इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी की वजह से, राइट? सॉरी, सिक्योरिटी की वजह से, राइट? दूसरा हमारे पास में इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी की वजह से।
as we know that we Indians, right, we are basically moving with the development. ठीक है, AI में we want to have fields, right? अभी बात करिए लास्ट क्लास में कि कैसे we are like thinking about expanding this AI even to the rural sector also, right? तो हम अपनी इस टेक्नोलॉजी को और ज्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं, राइट? उसके साथ में जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है वेस्ट एशिया, we know the conflicts that are going through, right, that we all are going through west asia का part, so we want to have some stability over there, right? एक planned friendship करना बहुत ज्यादा important है, right? So this visit is carefully planned so that friendship could move with proper strategies, right? Now let's understand, I have the basics understood कि exactly हम किसके बारे में बात करने वाले हैं. Now we are going to connect this news with prelims, with mains, ठीक है? अच्छा, what exactly we are talking about? So India's Prime Minister visits Israel, right? So this is showing us that India-Israel partnership is getting stronger, right? Cooperation जो हमारा defense में होगा, tech में होगा, agriculture में होगा, and after that in trade also it will be there, right? So India is also, maintaining balance with like Arab countries also, with Iran also, right? So this is known as what? This is known as strategic balance. Okay, so what we are doing, we are not taking any side. We are basically, aligning with people, right? We are aligning with countries, right? This is known as what? Multi-alignment कहते हैं इसको, right? अब ये visit हो क्यों रही है? So we all know that what exactly is happening in West Asia, right? Situation is very very tense, ठीक है? अगर हम आज के रीजनल की टेंशन की बात करते हैं तो अभी वॉर सिचुएशन इन गाजा इज गोइंग ऑन, राइट? उसके बाद टेंशन बिटवीन ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स इज एग्जिस्टिंग, उसके साथ साथ में यूएस मिलिट्री बिल्ट अप, राइट, इन द पर्शियन इज देयर, गल्फ इज देयर, राइट? सो हमारे पास में दिस राइवल ब्लॉक्स इज हेल्पिंग इन लार्ज नंबर, राइट? सऊदी अरेबिया का इशू चल रहा है, राइट? हमारे पास यूनाइटेड अरब का इशू चल रहा है. सो दिस इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? इट इज वेरी सेंसिटिव टाइम ग्लोबली इफ वी टॉक अबाउट, राइट? तो ये जो इजराइल के साथ में विजिट है, स्पेशली आफ्टर व्हाट लाइक हैपेंड विद गाजा, राइट, उसके बाद में वी आर जस्ट मेंटेनिंग, वी आर बेसिकली स्प्रेडिंग, वी आर जस्ट मूविंग विद दिस थॉट कि हम लोग एक बैलेंस करके चलने वाले हैं, राइट? अगर हम इंडिया और इसराइल की बात करते हैं तो दे हैव लाइक चेंज वेरी स्लोली एंड वेरी केयरफुली, राइट? तो कैसे चेंज हुआ? तो अर्ली फेज की अगर हम बात करते हैं 1947 से 1992 की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे रिलेशंस बहुत लिमिटेड थे. वी हैड लाइक वेरी लिमिटेड रिलेशंस ओवर हियर. आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया सपोर्टेड द पैलेस्टीन कोज, राइट? क्यों पैलेस्टीन को क्यों सपोर्ट किया था उन्होंने? पहले पैलेस्टीन को इसलिए सपोर्ट किया था क्योंकि उस टाइम पे इंडिया बिलीव्ड इन एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल, राइट? छोटी कंट्री थी, राइट? एंड बिकॉज ऑफ दैट कॉलोनियल स्ट्रगल दे सपोर्टेड देम, राइट? और उस टाइम पर अरब नेशन के साथ में हमारा सपोर्ट बहुत ज्यादा चल रहा था, राइट? नॉन अलाइन मूवमेंट प्रिंसिपल्स पे बिलीव करते थे हम, राइट? सो इंडिया रिकॉग्नाइज्ड इजराइल इन व्हेन इन 1950 दे रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है? बट फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस अभी भी इस टाइम पर भी एस्टेब्लिश नहीं हुए थे, राइट? ना ही इतना एंगेजमेंट था कि हमारे पास में कोई एम्बेसी लेवल का कोई सिनेरियो फिट हो सके, राइट? इतना भी एंगेजमेंट उस टाइम पर भी नहीं था, राइट? रीजन क्या था? बिकॉज इंडिया हैड लाइक स्ट्रॉन्ग टाइज विद अरब कंट्रीज, ठीक है? ऑयल की डिपेंडेंसी हमारे पास में बहुत ज्यादा थी गल्फ कंट्रीज पर, राइट? तो इसीलिए रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए ये लो प्रोफाइल और कोशन एक्ट जो था हमारे पास में लिया गया था विद इजराइल, ठीक है? और फेज कब की बात कर रहे हैं हम? ये कहानी बात कर रहे हैं ऑफ 1947 और 1992 की, ठीक है? अगर हम 1992 की बात करें, सो दिस इज कंसीडर्ड एज फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन. क्यों कंसीडर किया गया? बिकॉज इंडिया ऑफिशियली एस्टैब्लिश फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इजराइल. कैसे ये शिफ्ट हुआ? क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले तो सबसे बड़ी बात हुई एंड ऑफ कोल्ड वॉर हो गया, ठीक है? कोल्ड वॉर हमारा खत्म हो चुका था. इसका मतलब ये था कि हम यहाँ पर किस तरफ मूव कर रहे थे? हम लोग मूव कर रहे थे लिबरलाइजेशन की तरफ, राइट? There was like need for defense also, और हमें क्या चाहिए था? टेक्नोलॉजी सपोर्ट भी चाहिए था, राइट? अगर हमें ये सारी चीजें चाहिए तो एज आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट स्लाइड आल्सो कि इजराइल इन सारी ही चीजों में बहुत अच्छे हैं, राइट? सो दिस हियर 1992 बेसिकली मार्क्ड द ओपन कोऑपरेशन, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हमारे पास में रिलेशंस के साथ में अच्छे देखने को मिले थे, राइट? नाउ वी टॉक अबाउट दिस हिस्टोरिक विजिट. तो अगर हम इसकी बात करें तो नरेंद्र मोदी इन 2017 विजिटेड इजराइल, राइट? और ये सबसे पहली बार हुआ था कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर इंडिया का, राइट, यहाँ पर गए थे, राइट? सो दिस विजिट वाज कंसीडर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो सबसे पहले तो दिस वाज कनेक्टेड टू देयर पैलेस्टीन पॉलिसी आल्सो, राइट? उसके बाद में दे ओपनली रिकॉग्नाइज्ड इजराइल एज लाइक अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर 2017 में, राइट? And they expanded their cooperation in defense also and their technology also, right? So this is why this 2017 visit is considered to be the historic visit, ठीक है? आज की अगर हम बात करते हैं, if we talk about today's scenario, 2026 की अगर हम बात करते हैं, तो what exactly we are talking about? तो today India and Israel are like strategic partners also, right? उसके साथ साथ में डिफेंस पार्टनर्स भी हैं, टेक्नोलॉजिकल
कोलैबोरेशन भी हमारा बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है उनके साथ में, राइट। सो दिस रिलेशन इज व्हाट, दिस रिलेशन इज मल्टी डायमेंशनल, कि हम लोग सिर्फ टेक पे डिपेंडेंट नहीं है, हम लोग सिर्फ डिफेंस पे डिपेंडेंट नहीं है, राइट। सो दिस रिलेशन इज कवरिंग डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स, ठीक है, ओके। इसके साथ में अब हम लोग बात करेंगे डिफेंस की और सिक्योरिटी कॉपरेशन की। सो इजराइल इज वन ऑफ इंडियाज टॉप डिफेंस सप्लायर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू SIAPRI, ठीक है, इनके हिसाब से इंडिया अकाउंट फॉर लाइक अराउंड 34% ऑफ इजराइल्स आर्म एक्सपोर्ट्स, ठीक है। और ये कहानी किस पीरियड की है, 2020 से 2024 तक की कहानी बताई जा रही है, दिस 33%, ठीक है। इकोनॉमिक और हम लोग अगर बात करते हैं टेक्नोलॉजी रिलेशंस की, तो इजराइल इज नोन एज लाइक स्टार्टअप नेशन, ठीक है। स्टार्टअप नेशन क्यों, क्योंकि इनोवेशन के लिए जाना जाता है इजराइल, राइट। इजराइल इज बेसिकली नोन फॉर AI, साइबर सिक्योरिटी के लिए, राइट, एग्रीटेक के लिए, राइट। एंड इंडिया वांट्स टू बिल्ड इटसेल्फ इन टेक्नोलॉजी, राइट। बहुत बार देखा है, बहुत बार सुना है दैट फाइनली इंडिया वांट्स टू लाइक, they don't want to be dependent on China, they do not want to be dependent on Russia या फिर सिर्फ USA, they want to engage itself with like different countries, right, they want to expand their relations with different countries, right। तो वही चीज है यहाँ पर, क्योंकि इजराइल ऑलरेडी इतनी सारी चीजों में रिच है, सो दे वांट टू कोलैबोरेट विद डिजिटल इकोनॉमी आल्सो, स्टार्टअप इकोसिस्टम आल्सो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आल्सो, राइट। और उसके साथ साथ में सबसे बड़ी बात, डिफेंस टेक में दे वांट टू अपग्रेड देमसेल्फ टू इंडिया, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ चुका होगा, ओके। अब अगर हम बात करते हैं कि स्टार्टअप नेशन हमें समझ में आ गया, राइट, बैकग्राउंड स्टोरी भी हमें समझ में आ गई, राइट। तो अगर हम बात करते हैं दूसरे पॉइंटर की, दैट इज व्हाट, दिस इज agriculture and water cooperation. So Indo-Israel agriculture production, India and Israel created initiatives for water cooperation. Israel is a global leader in water recycling and desalination. So what we are talking about here, so Israel, basically India and Israel created this center of excellence in many Indian states, right. Their focus area, if we talk about, is what, it is on drip irrigation, right, water saving technology पर है, right, high yield seeds पर है, right. So they want to protect farming, right, greenhouses we are talking about here, right. So this is a very important when we talk about these drought prone areas in India, right. So this is why हम लोग यहाँ पर इनके साथ में relations बनाना चाहते हैं, right. Water cooperation की अगर हम बात करते हैं, we talk about water cooperation here. So this is like a global leader in water recycling or desalination, right. So Israel water agencies, they signed agreement with Haryana and with one more state, that is Tamil Nadu. हरियाणा की बात करें, so this basically was signed in 2022, right. अगर तमिलनाडु की बात करें, so this was signed in 2024, ठीक है। तो ऑलरेडी ये जो हमारे साथ में रिलेशंस है वो चल रहे हैं, राइट। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट इंडिया फेसेस सीरियस वाटर स्ट्रेसेस, राइट। और इसीलिए हमने पहले भी बात करी है कि कैसे एग्रीकल्चर पर हम फोकस कर रहे हैं, रूरल पर हम फोकस कर रहे हैं, वी वांट टू बिल्ड दिस टेक्नोलॉजी इन डिफरेंट प्लेसेस, राइट। सो इसीलिए हम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा कंसीडर कर रहे हैं दैट Israel basically we get support of Israel, right? उसके बाद में if we talk about this IMEC corridor, तो क्या है IMEC corridor? So this is alternative trade route to Suez Canal, right? Faster transport की बात हो रही है. This is going to connect, ports also, railways also, energies also, right? Digital cables we are talking about, and after this strategic counter to China's BRI, right? So Israel is basically important here, and Israel is connecting our Middle East to Europe, right? So this is why this IMS corridor is there, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अब इसके बाद में इंडियाज बैलेंसिंग एक्ट इन वेस्ट एशिया, सो इंडिया मस्ट बैलेंस रिलेशन केयरफुली। अब बैलेंसिंग नेसेसरी क्यों है, देखो अगर हम बात करते हैं इसराइल की, तो इसराइल ने हमें क्या प्रोवाइड करा है, अभी पढ़ा है कि वो हमें प्रोवाइड करा है डिफेंस टेक, राइट। इफ वी टॉक अबाउट सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया क्या दे रहा है, ऑयल सप्लायर है हमारे लिए, राइट। अरब, यूनाइटेड अरब की अगर हम बात करें तो ट्रेड के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ईरान की बात करें तो ईरान इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइक पोर्ट कनेक्टिविटी, राइट। सो इसीलिए हम जो है किसी एक की साइड सिर्फ इसराइल की साइड नहीं ले सकते हैं। व्हाट वी हैव टू चूज, वी हैव टू चूज दिस बैलेंसिंग अप्रोच, सारी ही कंट्रीज के साथ में बैलेंस अप्रोच करके चलना पड़ेगा, राइट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट हियर 80% ऑफ all imports from Gulf, right? 80 lakh plus Indian civilians are like living in Gulf countries, right? ट्रेड रूट जो है वो पास होता है इन्हीं के रीजन से, राइट। सो इंडिया हैव टू फॉलो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, मतलब इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी पे फोकस करना पड़ेगा, कोई परमानेंट अलायंसेस नहीं होंगे, राइट। कोई भी इश्यू जो है बेसिकली इस बेस पर नहीं होगा कि पार्टनरशिप हमारी कैसी है, राइट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू फॉलो है, वी आर गोइंग टू फॉलो है balanced approach, right? We are going to follow here balanced partnership, ठीक है। अब ये बैलेंस समझ में आ गया कि क्यों जरूरी है। अब
दूसरी चीज रीजनल सिक्योरिटी जरूरी क्यों है? तो रीजनल सिक्योरिटी इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया दैट वेस्ट एशिया इज अनस्टेबल राइट नाउ, राइट? आज के टाइम पर इफ वी टॉक अबाउट करंट रिस्क व्हाट वी आर गोइंग थ्रू, गाजा कॉन्फ्लिक्ट इज देयर, ईरान और इजराइल की टेंशन इज गोइंग देयर, राइट, फॉर सो मेनी इयर्स, राइट? मिलिट्री, यूएस मिलिट्री प्रेजेंस इज आल्सो देयर, राइट? उसके बाद में दिस रीजनल पावर ब्लॉक्स आर एग्जिस्टिंग, राइट? तो अगर हमारे पास में वॉर होता है तो ऑयल के प्राइसेस क्या होंगे? वो बढ़ जाएंगे। इंडियन का जो दिस डायस्पोरा इज देयर, सो इट विल बी एट रिस्क आल्सो, राइट? जो हमारा ग्लोबल ट्रेड है वो जो होगा डिस्टर्ब हो जाएगा इसकी वजह से, राइट? सो दिस इज व्हाई इंडिया इज गोइंग टू सपोर्ट टू स्टेट सोल्यूशन, मतलब इसराइल भी और पैलेस्टीन भी, राइट? सो इंडिया विल एक्ट एज व्हाट, एक तो पीस सपोर्टर की तरह भी काम कर सकते हैं, राइट, कि लड़ाई मत करो आप लोग, राइट? और उसके बाद में ग्लोबल साउथ की वॉइस बन कर दी, राइट? सो दिस इज लाइक अ ब्रिज बिटवीन दीज टू स्टेट्स, ठीक है? सो इंडियन इसराइल की अगर हम टाइज की बात करें, सो दिस इज फिल्ड विद लाइक डिफेंस, इट इज फिल्ड विद टेक्नोलॉजी, इट इज फिल्ड विद लाइक बैलेंस विद वेस्ट एशिया, ठीक है? आई होप दिस इज अंडरस्टूड. So this is a question that you have for homework. You have to write the answer in the chat box, and for the answers I want each and everyone's answer in the chat box, and for the PDF will be attached in the comment section. So this is it for today. I'll see you tomorrow at the same timing. Thank you so much for joining.